Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, ma'am. Very good afternoon, students. Am I audible to all of you? Yes or no? Audible to you or not? आदित्य आप यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नहीं, मैं कैमरा ऑफ है ना। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। एक मिनट, एक बार एंटर कर लीजिए। नोटबुक आप यहाँ रख सकते हैं। Students, am I audible to all of you? Yes or no? Okay. So let's continue. Have you all noted or completed the work which I gave you yesterday to write the questions which we have discussed? I was absent. What, Karthik? I was saying that I was absent in the last class. Acha, your voice is not clear. Can you repeat? Ma'am, I was saying that I was absent from some days. So I don't know what is going in the class. Okay, you were absent in the previous class. Okay. In previous class, we have discussed the physics question paper. And today we will continuing with the discussion part. So let's start. Ma'am, can you hear me? Yes, Mahapreet. Good evening, ma'am. Ma'am, if you don't have any query, I have doubt from this test. I want to ask you. From physics? No. Chemistry test. So, chemistry we will be taking in chemistry only. Otherwise, the things will get mixed up. So that's why I don't want to do that. Other students will get confused. So, जब हमारा chemistry का time होगा, that day I will be taking the doubts. Ma'am, means Saturday? Yeah, on Saturday. Today only physics doubts. Okay. चलिए question paper discuss करते हैं. Allow me a minute to open the question paper. Ma'am, this question paper I am only saying, which you have taken today. That is for chemistry, na? Today you had a chemistry test. Yeah, but physics test you have discussed already. All the I questions. haven't discussed the whole paper. Not yet. Yeah, whole paper. I have discussed up to question number 8. Yeah. So
any of the doubts you students have in this chapter, then do let me know. Otherwise, after discussing this question paper, we will be moving on to the next chapter. Okay, now let's discuss with the question number 9. In question number 9, read out the question number 9. Should I read out? Yes, please. Just a minute, ma'am. I'm reading it out. Yeah, ma'am. Where it is. Ma'am, just 2 minutes. I'm reading it out. Done. Take it out. Yes, ma'am. Ma'am, question number 9 is four cars A, B, C, D are moving on a level road. The distance varies. Time graphs are shown in the adjacent figure. Choose the correct statement. Okay. Just a second. Ma'am, that is visible only. The car B is slowest. Okay, just a second. I'm facing a little issue while using this digital pen. So just allow me a minute. Yeah. Ma'am, you can cross it and then again open it. It will be okay. Just okay, yeah. So in question number 9, they are asking us, a graph is given to us in question number 9, and they're asking that four cars A, B, C, and D, they are moving on a level road. Their distance versus time graph is given to us. So let's draw the graph. The graph is like this. This is the time axis. This is the distance axis. And this is C. Suppose this is D. This is C. Consider it as a straight line. I am unable to draw it. So just understand it's a straight line. This and another one is this. Okay, these are the four lines. This is A and this is B. So we need to tell from these that which statement is true. The first statement is that the car A is faster than car D. So do you know the steeper the graph is, the steeper the graph, what it means? जितना ज्यादा स्टीपर होगा ग्राफ, उसका मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वेलोसिटी होगी. Higher is the velocity. Why we saying velocity? Because this is a distance time graph, and distance time graph का जो slope होता है उससे हमें क्या find out होता है आदित्य? Distance time graph से हमें क्या मिलता है? स्पीड या फिर वेलोसिटी मिलती है. तो ये जो हमारी जितने ज्यादा स्टीपर होंगे, स्टीपर का मतलब होता है कि ये ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा होगा, लाइक इट इज, अगर हम बात करें सी जो है, सी ज्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू बी. तो जो सी होगा उसमें जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो ज्यादा होगी. हाउ? लाइक इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे, सो वी विल गेट टू नो कि इसने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करा है. सी पॉइंट ये जो है, अगर हम इसको वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वी विल सी कि यहाँ पे सपोज यहाँ पर 10 किलोमीटर है. एंड इफ सिमिलरली वी विल बी चेकिंग ऑन दिस ग्राफ बी, अगर बी से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे, इट वुड बी falling somewhere like here, so it could be 2 also. So that means steeper the graph, higher will be the velocity or speed. And if it is a velocity time graph, steeper the graph, more will be the acceleration. I hope it is clear. Is it clear or not? Ashwardhan, Anjali, have you understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so moving on, in the first option, it is saying car A is faster than car D. So is it correct?
Ma'am, D. D is the correct option. Just a Car. second, start checking with each of the options. Then we will be concluding that which one is the correct one. So first one is car A is faster than car D. Is it correct? No, ma'am. No. No, ma'am. Because B has more steeper graph than A, so that's why this is wrong. Car B is the slowest. Is it true? Ma'am. Yes, Yes, ma'am. it's true. Car B because it is the least steeper graph, so that's why car B is the slowest. Now tell me which one is the fastest? Ma'am, RC. car C is car B is the fastest. Yeah, this is the slowest and C is the fastest. Ma'am, B is the. Just a second. Students, allow me a minute. Actually, I'm facing issue while using this digital pen. Just wait. ये एक मिनट समझ सर ये वाला जो सिस्टम है इसमें सर इशू आती है वो डॉट नहीं दिखाई दे रहा मुझे और मुझे समझ नहीं आ रहा है और सेक्शन चेंज हो जाता है ये सर दिखाई नहीं देता है कि पेन कहाँ पर है उसका ये थोड़ा सा अलग होता है ना हाँ इसमें बार बार रॉन्ग हो रहा है लिख भी रहे हैं तो राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है इसमें जैसे समझ में आ रहा है So ये भी बार बार लगा हुआ है वो काफी टाइम पहले जैसे काफी अच्छी राइटिंग है क्लास वो टेबल इसमें बच्चों को क्या समझ में Good evening, sir. कैसे बनाएंगे Sir, ठीक है. students just made and trying to fix this issue लाइक अभी आपने किया तो समझ में आ गया लाइक मुझे अभी सर जैसे यहाँ पे मार्क करना है तो फिर मुझे वो डॉट नहीं दिखाई दे माउस दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे मार्क करेंगे उसके ऊपर तो ये देखिए अब वो डॉट कहाँ है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है अब मैं कहीं पे भी मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तब मुझे समझ आता है यार फिर अगेन सर लोकेट करना डिफिकल्ट हो जा रहा है इसमें तो क्या ये कोई सेटिंग है जिसमें एक्स्ट्रा यूज कर सो ऐसे में क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को लिखने में एक्सप्लेन करना
आ तो रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। वो दिखाई नहीं देते, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो साइड में विजिबल नहीं होता। तो ये है, या तो आपका ओवर राइटिंग हो जाएगा जहाँ आप ऑलरेडी लिख चुके हो। इसका सर साइज इंक्रीज हो सकता है, सो दैट ये एटलीस्ट दिखाई दे कहाँ पर है। नहीं, आपका मार्किंग का तो शायद इंक्रीज हो गया। दिख रहा है थोड़ा सा, जैसे अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और साइज बड़ा कर दूं। Sorry, students, for the inconvenience. So now let's continue. So which one is the fastest over here in this graph? Yeah, C is the fastest. So that means option B is correct, and we are checking with the other option. C is that D is faster than C. Is it correct? No. No, D is slower than C. And the last option is car C is the slowest. That is also wrong because we know C is the fastest. So the correct answer would be what? Option B. It would Car be B B. is the slowest. Yeah, B is the correct answer. So let's try to do that. So typing वाला आ रहा है। सिर्फ टाइपिंग वाला आ रहा है, मूव नहीं होता, पेन नहीं चल रहा है। कोशिश करिए ना, ये वाला बटन ना दबाएं ना, तो मेरे शायद इस वजह से आपका इश्यू आ रहा है। Okay, so the correct answer is option B is correct. That is car B is the slowest.
Okay, now let's move on to question number 10. Question number 10 says a boy goes from A to B with a velocity of 20 meter per minute. So that means A to B, the boy is going with velocity how much? 20 meter per minute. ये काफी बच्चों ने गलत किया है ये वाला आंसर. Then and comes back from B to A. वापस B to A आ रहा है. Velocity how much? It is 30 meter per minute. Velocity is 30 meter per minute. Now it's given the average velocity of the boy during the whole journey is. We need to calculate the average velocity. Okay. So yes, Aditya, how you solved it? You have solved this question. What is the average velocity? We need to find out. बताइए आपने आंसर सही किया था? कैसे कैसे सही निकाला आपने आंसर? रॉन्ग था. रॉन्ग था आपका? अच्छा, किसका आंसर सही आया था ये? 24 meter per minute. Yes. Only this much information is given in this question. Nothing else is given. Only the velocity from A to B and B to A is given. And we need to calculate the average velocity. How we will be calculating this, Harshvardhan? I don't know. Yes. How to calculate the average velocity? Who is absent today, Akshita? Yes, किसका आंसर सही आया था ये एग्जाम में? Tell me, otherwise I need to check. Those who have corrected this answer, how you have solved out? Mine was correct, but I have guessed it. What? मेरा आंसर सही था लेकिन मैंने guess करा था. Okay, you guessed it. You haven't solved it. Anjali, what about you? Ma'am, I was wrong. Your was wrong. Meherpreet? Are you there? Okay, now let's try to find it out. See, if we are talking to A to B, suppose let the distance traveled from A to B, distance is say x kilometer. X meter we are considering because velocity is given in meter only. So suppose it is x meter. And from B to A also the distance is going to be x meter. Isn't it so? Right? So we need to calculate the time taken. Agar velocity 20 meter per minute hai, then how much would be the time taken to complete the distance x? So that means we need to identify time period for both of the two equations. So first, let's calculate the T1. So T1 we are considering when the object is going from A to B. In this scenario, object is going from A to B. So how you can calculate the time period? Do you remember any of the formula related to velocity and distance? What is the speed equals to? Distance upon time. This formula we have studied in mathematics too. Yes. So if we will rearrange this formula, what we will get? We will get time period is equivalent to distance upon speed. Isn't it so? Time को अगर हम इस side में करेंगे, so we will be getting the formula for time, distance upon speed. And we said that we have considered because हमें distance यहाँ पर given नहीं है, तो हमने distance को क्या consider कर लिया? A to B कितना मीटर है distance? X meter. So that means X upon time. Sorry, speed. Speed is 20 meter per minute, right? So that means this is the time period for the first object. And for the second case, what would be the time to? Again, it is for when object is moving from B to A. So यहाँ पर again same formula we would be using. Distance कितना है traveled? How much is the distance?
अगेन x ही है, a से b को अगर हमने x माना है तो b से a भी वापस क्या हो जाएगा, x मीटर, and then the velocity, it is given how much, 30 meter per minute, right? So that means we have calculated time period for the first case when the object is moving from a to b, and for the second case when the object is moving from b to a. Now we need to calculate the average velocity or average speed. We know that the formula is total distance traveled upon total time taken, right? So now let's solve it. Try to solve this mathematically and then tell me what would be the answer. Do it in your notebook and then share the picture also. Do it right now. Anyone having doubt so far? Average velocity. Average velocity will be what? Total distance on total time. I'm sorry, student, I'm unable to write it properly. I hope you are understanding what I mean to say. Okay, calculate it and tell me what's your answer. Consider the time t1 plus t2 as x by 20 plus x by 30. ये आपको time period लेना है. डिस्टेंस के लिए आप क्या लोगे, x प्लस x कंसीडर करेंगे डिस्टेंस. ठीक है, पुट द वैल्यूज. टोटल डिस्टेंस वुड बी हाउ मच, इट इज x प्लस x अपॉन टाइम, x अपॉन 20 plus x upon 30. Do take the LCM to solve the denominator values. Are you able to solve this or you want me to solve this? Done. Done. How much is coming? Ma'am, 24. Okay, very good. Anjali, have you solved it? Ma'am, solving. Okay, Meherpreet, what about you? Ma'am, 24. 24, very good. आदित्य, कहाँ तक पहुँचे बच्चे? कहाँ से 24 आया? आपने बिना देखे बिना सॉल्व किए लिख दिया आंसर. एक्सप्लेन मी कैसे सॉल्व किया आपने इसे? एलसीएम लिया 20 and 30 का एलसीएम क्या आया बच्चा? 60. 60 आया है. आदित्य, आपका 50 आ रहा है. ट्वेंटी और 30 का एलसीएम लेते हैं. लेट्स चेक. 2 10 times, 15 times, then let's take 5. Would be 2 1 times, then 3. कितना आ रहा है एलसीएम आदित्य? 5 2 times 10, 20. 60 आ रहा है ना? So 60 हमें लिखना है एलसीएम. So if it's 60, it is 60. It would be 3x plus 2x. It would be 2x in the numerator, and then it would be 3 plus 2 5x upon 60. You know we can do the reciprocal of this, है ना? 5x upon जो 60 हमने 60 5x upon 60 को रेसिप्रोकल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 by 5x.
60 by 12x. Just a second. I hope you are able to understand that what I'm trying to write. I'm dealing with just a second. 60 upon 5x. Let's solve it further. X goes cancelled out. X and X will be cancelled out. 5 से अगर हम 60 को divide करेंगे, we will be getting 5 15 times. No. 12. 12 times. Okay. Yeah, 12 times 60 and 2 into 12, it would be 24. So the answer would be 24. I hope now you have understood that how we need to solve such problems to calculate the average velocity if the two velocities are given to us. Have you all understood? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Anjali? Yes, ma'am, I understood. Okay, so the answer is 24. Which option is this? This is option number A. So A is the correct answer. मैम वेलोसिटी किसमें दे रखी है मैम? Okay, now let's go to next question. Question number 7. Question number 7 कुछ बच्चों ने गलत किया जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था. Let's see. Just a second. कोई इशू आ Not visible है बच्चों. मैम तो वेट करो थोड़ी देर ना. मैम मैम
Okay, students, let's continue. Sorry for the inconvenience. So yes, the option number A is correct for this one. Now let's quickly move on to the next question. मैम Yes, मैम आपने स्टार्टिंग में यूनिट मैम मीटर पर मिनट लिख रखी है मैम. yes. सो आंसर हमें क्या पूछा है यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना. सो आंसर मीटर पर मिनट आ जाएगा यहाँ पर. मीटर पर मिनट. ठीक है. Okay, now let's move on to question number 11. Number 11, it is given, drawing an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. So just focus carefully. यहाँ पे आपका एक spaceship है. This is the spaceship, and from this the signals are reaching. Okay, and the signals are reaching to the ground. How much longer it is taking? कितना टाइम लग रहा है इसको यहाँ पर सिग्नल को स्पेसशिप से यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंचने में? 5 मिनट लग रहे हैं, राइट? The time taken is 5 minutes. And then it is saying what was the distance of the spaceship from the ground station. हमसे क्या पूछा गया है? Distance find out करना है हमें. Time हमें given है, which is 5 minutes. And what else is given? The speed of light is given. That means speed is given, which is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, so that means we can easily calculate distance from this. हमें time given है, हमें speed given है. We can easily calculate the distance by which formula? कौन सा formula लगेगा आदित्य यहाँ पर? बताइए. Speed into time. ठीक है, but time हमारा minute में है and speed is given in meter per second. So first of all, we need to convert this into. We need to convert the time into second. So 5 into 60 we need to do. So it would be 300 seconds. I'm unable to write it properly. So I hope you are understanding that what I am trying to convey. We remember that speed is equals to distance upon time. And we need to calculate the distance. So the formula for distance is going to be. It is going to be speed into time. Now, if you put the values, speed is given 3 into 10 raised to power 8. Time is given how much? 600 seconds. 300. Okay, sorry. So time हमने अभी calculate किया. 5 6 times 30 होता है. Yes, 600 नहीं 300 आया हमारा. So it is 300. So 3 times कितना हो जाएगा? 9 into 10 raised to power. यहाँ पर दो जीरो हैं 300 में, राइट? एंड यहाँ पे 10 की पावर 8 है. तो 10 की पावर 8 इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं. 3 into 10 की पावर 2 302, राइट? सो दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा हमारा 9 into 10 raised to power 8. I hope you have understood this. Meherpreet, Anjali, Harshvardhan, have you understood this? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, now let's move on to question number 12. Question number 12 is saying that a bus is decreasing its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. We need to calculate the acceleration. तो बताइए कैसे calculate करेंगे महरप्रीत इसमें हम? Question number 12 we are discussing. Which formula can be used? Number the use. Speed given है आपको, ठीक है? और क्या given है आपको? Time given है आपको. कितना given है time? 5 seconds given है. Okay, should we discuss it verbally because I am unable to write it properly? Shall we? Yes. Students, shall we discuss it verbally?
because I am unable to write it. Yes, ma'am. Yes or okay, so just look at the question. It is given that speed हमें given है, कौन-कौन सी speed given है? 80 किलोमीटर पर आवर given है और क्या given है? 80 किलोमीटर पर आवर एंड डिक्रीज होके कहाँ तक पहुंच रही है? 60 किलोमीटर पर आवर तक, राइट? सो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन फॉर्मूला? v minus u upon v. v1 v2 minus v1 और we can say change in velocity या फिर change in speed upon time taken. so change in speed कितना हो जाएगा upon time? change in speed कितना आएगा? look, the information is given in किलोमीटर पर आवर. हमें स्पीड किस में गिवन है? किलोमीटर पर आवर में गिवन है, बट जो हमारा टाइम है वो किस में है? सेकंड में है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. आई होप यू नो दैट हाउ वी नीड टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. डू यू रिमेंबर? यस और नो? अंजलि, do you know how to convert kilometer per hour into meter per second? Ma'am, can you repeat? What? Can you repeat? I can't understand. Yes, Meherpreet, how we will be converting kilometer per hour into meter per minute? Karthik? We will multiply it by 5 upon 12. 18. 5 upon 18. 5 by 12, yeah, 5 by 18 हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, सो वी कैन कन्वर्ट इट. तो हमें 80 को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और 60 को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. फिर हम दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो 60 किलोमीटर पर आवर है वो हमारी सेकंड वेलोसिटी है. इनिशियली जो हमारी स्पीड थी वो 80 थी और डिक्रीज होकर कहाँ जा रही है? 60. तो हम 60 माइनस 80 करने वाले हैं या फिर 80 माइनस 60 करेंगे? बताइए. ऑब्वियसली 60 माइनस 80 हम करेंगे, तो 60 को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी दैट मींस वो माइनस 80 किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो, उन दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. एंड टाइम हमारा क्या रहने वाला है? 5 सेकंड ओनली. ठीक है. आफ्टर दैट टेल मी द वैल्यू व्हिच यू आर गेटिंग फॉर द एक्सेलरेशन, दैट वुड बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव. बताइए. Negative. नेगेटिव आएगी ऑब्वियसली, बिकॉज एक तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है एंड वी नो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या आता है? नेगेटिव आता है. डी एक्सेलरेशन का मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. अंडरस्टूड. सो यहाँ पर दूसरा हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम यहाँ पे 60 की जो वैल्यू आएगी इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड, उसको माइनस करेंगे ग्रेटर वैल्यू दैट इज 80 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 माइनस 18 दैट मींस ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा. सो यहाँ पे लास्ट में जिसका आंसर यहाँ पे जिसने नेगेटिव नहीं लगाया है उसका जो मार्क्स है वो डिडक्ट हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमारा डी एक्सेलरेशन है तो आपको माइनस में आंसर लिखना है. यू डोंट हैव टू राइट इट इन पॉजिटिव. ठीक है, आपको कन्वर्ट नहीं करना है. नेगेटिव में आ रहा है तो आने ही दीजिए, तभी तो आइडेंटिफाई होगा कि हाँ आपने करेक्ट कैलकुलेट किया है यहाँ पे. अच्छा, आफ्टर दैट आई गेस आपकी वैल्यू आ रही है -1.1 आएगी. एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको यहाँ पे मेजरिंग यूनिट भी लिखनी है. इफ यू रिमेंबर yesterday I told you that why it is important to write the magnitude as well as the measuring unit whenever we are writing the value for any of the physical quantity. I hope that confusion is clear to all of you. Yes. Okay, shall we move on to next question? Yes. Harshvardhan? Yes, ma'am. Need all of your responses. At least that you can do. Anjali, are you there? Yes, ma'am. Meherpreet? Meherpreet, are you there? Okay, those who are not replying, I will be removing you from the class. Meherpreet, I guess you are not there.
Okay, let's continue to question number 13. Question number 13 is saying that a car is having a uniform acceleration of 4 meter per second square. क्या given है आपको? Acceleration given है which is uniform. That means constant acceleration 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? अच्छा, ऑब्जेक्ट का हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ओके, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर हाउ मच टाइम पीरियड? आफ्टर 10 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट, मतलब स्टार्ट के 10 सेकेंड बाद, राइट? सो फर्स्ट वी विल राइट द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू अस. टाइम पीरियड हमें यूज करना है 10 सेकेंड. Meherpreet, where you been? You were not replying. There? Yes, ma'am. Yes, where you went? Ma'am, actually your voice was not coming to me. Okay, you should have mentioned it. अगर बच्चा आपको वॉइस नहीं सुन रही है, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, राइट? Okay, ma'am. सो इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट से 10 सेकंड आफ्टर कितना डिस्टेंस कवर अप किया है. सो अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट से है, सो दैट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? u. क्या होगा u? ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम स्टार्ट, मोशन स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है उसका. तो दैट मींस ऑब्जेक्ट किस पे थी पहले? 80 किलोमीटर. तो रेस्ट पे थी, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. 0 मीटर पर सेकेंड, राइट? सो दैट मीन्स हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. एक्सेलरेशन हमें गिवन है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस? बताइए, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी यहाँ पर? सेकेंड. Second equation of motion. Very good. What is the second equation of motion, Meherpreet? Do you remember what's the second equation of motion? Yes, ma'am. Okay, just wait, Harshvardhan. Meherpreet, please answer this. क्या होगी बच्चे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? S इक्वल्स टू आदित्य? MS is equal to U plus half AT square. नहीं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हम U को क्या पुट करेंगे? 0. तो दैट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट? ये कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स S इक्वल टू हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिर्फ हाफ AT स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस यू कैन डू इट बाय योर ओन. आपको आपका जो होमवर्क होने वाला है, दैट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर. Next is question number 14. They are asking derive mathematically the first equation of motion. काफी बच्चों ने सिर्फ v equal to u plus at acceleration का फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट कर दिया है, बट आपको यहाँ पे ग्राफ भी बनाना था. I told you आपको ग्राफ के थ्रू बताना है, राइट? तो वो ग्राफ जो हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी, गो थ्रू दैट पार्ट और फिर वो आपको लिखना है सोल्यूशन में. जिसने ग्राफ नहीं बनाया उसके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 14, आपको इसमें ग्राफ बनाना था लाइक दिस. ए टू बी ऑब्जेक्ट जा रही है. डू यू रिमेम्बर? ये हमारा टाइम पीरियड था, ये हमारा वेलोसिटी था, वाई एक्सिस. फिर हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया था, एक रेक्टेंगल, दोनों के एरिया को सम किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए. बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यूज करेंगे a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी यूज करेंगे. ओके, सो आपको ये सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है दो बॉडी का आपको, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट second which is B. They both are traveling along the positive direction given in the figure. Are the bodies moving with uniform acceleration? क्या दोनों objects uniform acceleration से move कर रही है 15 क्वेश्चन में? Yes, ma'am. yes, दोनों का जो है straight line है, तो दोनों ही
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। फिर पूछा है विच बॉडी इज मूविंग विद ग्रेटर एक्सेलरेशन। ग्रेटर एक्सेलरेशन कौन मूव करेगा, हमने डिस्कस किया। यस, जिसका ग्राफ ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा खड़ा किसका ग्राफ है, ए का स्टीपर है, सो दैट इज व्हाई ए इज मूविंग विद मोर एक्सेलरेशन। सी में पूछा हाउ यू कैन फाइंड ग्राफिकली द एक्सेलरेशन फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैसे निकालेंगे, स्लोप से। राइट, स्लोप से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर ऑल द क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, आई गेस। हार्ड था थोड़ा बहुत ना उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वैल्यूज गलत डाल दी थी। आपने सॉल्व नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो गया। सो योर होमवर्क इज सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। आई विल बी चेकिंग इट इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, Ma'am, again. bye students, have a good day, you can leave Ma'am, the you have to class. solve Ma'am, it for again. You have to solve it in your notebook and then you have to submit it. Okay. Ma'am, I am asking that we have to ma'am, submit it. do it once again in our notebooks. What, Harshvardhan? मैम मैं पूछ रहा हूँ कि हमको अपनी नोटबुक में वापस से करना है। आपने कब किया सॉल्व, सिर्फ आपने टेस्ट पेपर दिया था, उसके बाद सॉल्व किया आपने एक बार भी? नो मैम। तो ठीक है, इसीलिए आपको करना। हाफ पेपर कल हमने सॉल्व कर लिया था 8-9 क्वेश्चन तक, और जो Welcome, बाकी I क्वेश्चन am going somewhere. Can I leave? व्हाट महरप्रीत? Ma'am, I am going somewhere. Can I leave? Yes, you can leave the class and complete the homework. Yes, Anjali, Karthik also, you can leave the class. Bye students, have a nice day. Thank you. Bye. Karthik, you can leave the class.